press the recording button. Everything you press henceforth shall be recorded. Yes, yes. Hello and welcome to Legally Speaking with me, Tarun Nangia. Today we heard the big news that Rahul Gandhi, Congress Member of Parliament, has been disqualified from Lok Sabha. This was a result of a court judgment of a MP-MLA court in the state of Gujarat, which is the Surat court. The court convicted him on charges of defamation, and the law states that once you are convicted for more than 2 years on these charges, you stand to be disqualified as a member of the Lok Sabha. You can't hold office. But we'll get to the detail of this issue. We'll try to understand it better legally. I have with me somebody who understands these things better. I have with me Advocate Ashwini Upadhyay. To share with you, Ashwini Upadhyay ji was the one who filed the public interest litigation that led to the setting up this MP-MLA courts. Am I right, Mr. Upadhyay? Yes, yes, perfect. And so he can tell us this better. We have Advocate Sridhar Kotaraju. He's an advocate on record in the Supreme Court of India. He practices at the Supreme Court and the Delhi High Court. Good to see you as well. And looking forward to understand the legal aspects better from you and what could happen in future, what has happened. At the outset, let me request Shri Ashwini Upadhyay ji to explain करिए हमको कि what has happened सूरत में. हमने जजमेंट देखा, वो भी गुजराती में लिखा हुआ था. क्योंकि लोकल कोर्ट का वहां का जजमेंट है, हाई कोर्ट में आएगा तब इंग्लिश में आएगा. वहां क्या हुआ एंड व्हाट इज द फ्यूचर? तरुण जी, राहुल गांधी की एक चुनावी रैली थी जिसमें उन्होंने जाके वहां ये बोला था, पहले नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया, फिर नीरव मोदी का नाम लिया, ऐसे उन्होंने 5 मोदी सरनेम को यूज करके बाद में ये बोला कि लगता है सारे मोदी चोर है. तो इनफैक्ट उन्होंने केवल नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं किया, उन्होंने एज ए मोदी सरनेम, एज ए मोदी कम्युनिटी, एज ए मतलब कंप्लीट कम्युनिटी को ही उन्होंने उस पर ले लिया कि सारे चोर हैं. उसके बाद एक और मिस्टर मोदी है, वो एक सोशल एक्टिविस्ट है, उन्होंने PIL फाइल किया और उन्होंने पिटीशन फाइल किया सूरत के कोर्ट में. मैंने 2016 में PIL फाइल किया था तरुण जी सुप्रीम कोर्ट में, जिसका उसमें मेरी 3 मांग थी. पहली मेरी मांग ये थी कि MLA MP के लिए स्पेशल कोर्ट बनना चाहिए. अभी MLA MP को हर जगह VIP ट्रीटमेंट मिलता है, ट्रेन में VIP ट्रीटमेंट मिलता है, फ्लाइट में VIP ट्रीटमेंट मिलता है, मंदिर के दर्शन में VIP ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन कोर्ट में उनको VIP ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था. तो उनको कोर्ट में भी VIP ट्रीटमेंट मिले, उनके लिए स्पेशल कोर्ट बने और उनका मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड हो जाए. जैसे जल्दी उनको दर्शन मिल जाता है, जल्दी टिकट मिल जाता है ट्रेन का. मैं चाह रहा था कोर्ट से उनको जल्दी न्याय भी मिल जाए. 2017 में जस्टिस गोगोई जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने बहुत एक अच्छा फैसला दिया और पूरे देश भर में MLA MP कोर्ट बना दिया. MLA MP कोर्ट बनाने के साथ सारे कोर्ट्स को यह डायरेक्शन दिया कि MLA MP चाहे वो सिटिंग हो चाहे फॉर्मर, पहले का MLA MP हो या सिटिंग MLA MP, सबके मुकदमे को MLA MP कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए और 1 साल के अंदर सुनवाई होनी चाहिए. उसमें मेरी दूसरी मांग ये है कि जो आदमी चुनाव, जिसको सजा हो जाए, उसके चुनाव लड़ने पे लाइफ बैन हो जाए. और तीसरी एक और PIL है जिसकी भी सुनवाई अप्रैल में होगी, उसमें हमने मांग किया है कि जो आदमी कन्विक्टेड है, सजा याफ्ता आदमी के पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पे भी कंप्लीट बैन होना चाहिए. पहली प्रेयर ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी, 1 साल के अंदर डायरेक्शन हो चुका है. उसके बाद ये मामला राहुल गांधी का फास्ट ट्रैक कोर्ट में गया और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि आपको 1 साल के अंदर डिसाइड करना है, इसलिए नतीजा हमारे सामने है कि इसका फैसला कल आ गया. और ये कोई राहुल गांधी का पहला नहीं आया तरुण. अब तक मेरी जानकारी के अनुसार 200 से ज्यादा सांसदों और विधायकों की सदस्यता खत्म हो चुकी है. आजम खां की सदस्यता खत्म हुई, मुख्तार अंसारी की सदस्यता खत्म हुई, अतीक अहमद की सदस्यता खत्म हुई, बहुत सारे, अभी एक लद्दाख के सांसद हैं उनकी सदस्यता खत्म हुई है, मुजफ्फरनगर के विधायक है उनकी सदस्यता खत्म हुई है. देश भर में सिटिंग और फॉर्मर मिला के मोर देन 200 MLA MP की सदस्यता जा चुकी पिछले 5 साल में. उसमें लेटेस्ट गई है राहुल गांधी की. मेरा ये मानना है कि इससे बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर आप चुनाव में केवल बतौलेबाजी करेंगे, झूठ बोलेंगे, किसी के ऊपर कुछ भी आरोप लगा देंगे, केवल ताली पिटवाने के लिए, 2 मिनट की ताली पिटवाने के लिए अगर आप फालतू बातें करेंगे तो आपको 2 साल की सजा होगी. एक बड़ा एस्टेब्लिश हो गया. दूसरा मेरा यह कहना है कि कन्विक्टेड आदमी आज की डेट में चपरासी नहीं बन सकता. एक सजा याफ्ता व्यक्ति, जैसे राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो गई, अब वो गवर्नमेंट जॉब के लिए बिल्कुल अनफिट हो चुके हैं. मतलब चपरासी, होमगार्ड, सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं बन सकते, लेकिन वो पार्टी अध्यक्ष बन सकते हैं. इसलिए मेरी दूसरी PIL चल रही है कि जो आदमी सजा याफ्ता है उसके चुनाव लड़ने
पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पे कंप्लीट बैन होना चाहिए। अभी हमारे देश में बहुत सारे कन्विक्टेड लोग हैं, लालू जैसे लोग हैं जो सजा याफ्ता है, चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन वो पार्टी अध्यक्ष बने हुए हैं। मतलब खुद चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन कौन चुनाव लड़ेगा ये डिसाइड करते हैं। वो टिकट बांटते हैं, फॉर्म 1B होता है, उस पर वो साइन करके देते हैं, भाई इस विधानसभा से ये लड़ेगा, इस विधानसभा से ये लड़ेगा। मेरा ये मानना है कन्विक्टेड के लिए पॉलिटिकल सिस्टम में कोई भी प्लेस नहीं होना चाहिए, कंप्लीट बैन होना चाहिए, उससे हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होगी। Okay, point well taken. I'll go across to Advocate Sridhar Pottaraju. Can you please take us through the legalese of this whole issue? See, what has happened now is in playing out of the constitutional mandate. Article 101, 102 deal with the subject. As soon as a person, a sitting member of the parliament is convicted, he stands disqualified by the provisions of the constitution, and the notification, etc., becomes a ministerial act. So the day the conviction has been pronounced, he stands disqualified by virtue of the provisions of the constitution. Now, the sentence is the trigger for the constitutional provisions to be invoked for disqualification. The sentence in the present case is 2 years. And the Parliament has enacted the Representation of People's Act 1951. Section 8(3) is the relevant provision which actually empowers the Parliament, or the disqualification for 2-year sentence has been brought in by Section 8(3). Earlier, there was a provision, subsection 4 to section 8, which gave a leeway to sitting members for a period of 3 months to avail the remedies of appeal, etc. But Supreme Court, in a judgment in 2013, held that to be unconstitutional, being beyond the powers of the Parliament in view of the mandate that of the Constitution under Article 101 read with 102, that a seat still stand vacated on his being convicted, in accordance with the law declared by the Parliament. So by operation of law, now a sitting member of the Parliament is unseated, and then until a competent court in exercise of its powers under the CRPC, if he chooses to file an appeal under Section 374 of CPC and invokes the powers under 389 of CRPC to get the sentence and the conviction also stayed or suspended. So mere grant of bail or a stay of sentence would not be adequate, but his conviction itself has to be stayed or suspended. And that will be the only way out for a sitting member of the legislature to actually get saved from further consequences. So that is the only provision now available for a person who's in a public office by way of an elected representative in the state assemblies or in the parliament, that he can avail of in law. That's where the law stands. So you are saying for the viewers to under the sentence has to be suspended, A, and the conviction has to be stayed. Yes, it's not merely letting him free on bail, as the trial court, after pronouncement of its judgment and the sentence, has given him that opportunity and invoking its powers to release him on bail, since he was already on bail, giving him a reasonable opportunity to approach an appellate court and appeal, and then also get the necessary relief both on account of sentence as well as the conviction is concerned. And this can be given by High Court. If not, then he has to approach the Supreme Court for this. Yes, the Appellate Court in Gujarat will have to deal with this appeal. And then as and when the appeal is filed, normally the application for suspension of the sentence and the conviction is also moved. The court, for reasons which are very strong reasons, would consider the stay of conviction and then will pronounce on the basis of the reasons cited. For the consequences should be very serious, that the appellant seeks a suspension of the conviction, and if the court is satisfied, they will definitely consider that prayer. One question before I go to Ashwini Upadhyay is there a case for moving directly to Supreme Court, or it generally happens that you go to High Court and to Supreme Court in such cases? See, this is a statutory appeal which is available. So normally that is required to be availed, and then as a practicing lawyer, I would also recommend that that's the course one should adopt. Bypassing the usual courts of the hierarchy of appellate courts is not advisable, for the simple reason that you would lose the opportunity of placing your facts and law contentions before the appellate court.
By bypassing it, one can only invoke Article 136, which is the discretion of the Supreme Court, and it is not recommended in a case of conviction and sentence. Point well taken. I'll go across to Ashwini Upadhyay. एक कॉमन जनता के लिए अगर आप एक्सप्लेन कर सके, राहुल गांधी ने ऐसा क्या बोला जिसकी वजह से कन्विक्शन हुआ, बाकी जो होने वाला है लीगलीज, अभी एडवोकेट श्रीधर पुट्टारा जो एक्सप्लेन टू ऑल ऑफ अस, क्या बोला था, क्या हुआ, एक कॉमन भाषा में अगर आप एक्सप्लेन कर सके। देखिए, राहुल गांधी ने देश के सारे मोदी को चोर बता दिया, पूरे सब मोदी चोर है। भारत में नहीं करोड़ों तो लाखों मोदी रहते हैं, मोदी सरनेम यूज करने वाले भारत में लाखों लोग हैं, थ्रू आउट द कंट्री है। अब सारे मोदी को चोर बता देना मतलब एक प्रधानमंत्री एक व्यक्ति को टारगेट करने के लिए सारे मोदी को चोर बता देना, अपने आप में ये सेक्शन 499 और सेक्शन 502 का ऑफेंस बन गया। एक बात जरूर इसमें समझना पड़ेगा तरुण जी, अभी तो उनको 2 साल की सजा हुई है और उनको कोर्ट ने कॉन्करेंट कन्विक्शन दिया है। सजा 2 तरीके की होती है, कॉन्करेंट होती है, कंसेक्टिव होती है। अगर वो अपील में गए और कोर्ट को लगा कि नहीं ये मैटर ऐसा है कि इसमें कंसेक्टिव इसमें कन्विक्शन होना चाहिए था, तो ये 2 साल की सजा बढ़ भी सकती है। कॉन्करेंट है तो मिनिमम 2 ईयर्स है। अगर ये कंसेक्टिव हुई तो सेक्शन 499 और 502 दोनों धाराओं की सजा अलग अलग चलेगी, मतलब पहले 499 की सजा चलेगी, फिर 502 की चलेगी, और अगर ऐसा हुआ तो ये सजा बढ़ भी जाएगी। एक बात जरूर इसमें स्पष्ट है कि आप डेमोक्रेसी को मजाक नहीं बना सकते, ये बड़ा क्लियर कट मैंडेट है, बड़ा क्लियर कट है। और जहां तक बात यह है कि उनको बेल, अभी उनको टाइम मिला हुआ है, जेल नहीं गए हैं, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि अभी तक जो मैंने पिछले 200 सांसदों का रिकॉर्ड देखा, चूंकि मेरी PIL है सुप्रीम कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है, तो जब भी ऐसा किसी सांसद विधायक को सजा होती है थोड़ी सी मुझे तसल्ली भी होती है, खुशी भी मिलती है, चलो हमारे द्वारा हमारे एफर्ट से एक MLA MP कोर्ट बनी, दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट भी बन गई है, ऐसे पूरे देश में बनी हुई है, तो फिर मैं उसको नोट करता रहा। लेकिन मुझे अभी तक कोई एक भी मामले में अपीलेट कोर्ट ने सेंटेंस को स्टे नहीं किया। ये मेरा इनफैक्ट जब आजम खां का मामला आया था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट तक आजम खां के तरफ से अपील आई थी, चिदम्बरम साहब उसमें अपीयर कर रहे थे और मेरे सामने वो मैटर आया था जब कोर्ट नंबर 2 में आया था, तो सुप्रीम कोर्ट तक आए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सेंटेंस को स्टे नहीं किया, बस गिरफ्तारी पे जो उनकी रोक थी उसको कंटिन्यू किया। लेकिन जो सरस्ता खत्म हुई, जब तक सेंटेंस, जैसा भी हमारे फ्रेंड ने बताया, जब तक सरस्ता को सेंटेंस को स्टे नहीं करेंगे तब तक सरस्ता बहाल नहीं होगी। और अभी तक का रिकॉर्ड ये है कि 200 जितने केसेस हैं किसी का सेंटेंस स्टे नहीं हुआ है, इसलिए सरस्ता किसी की बहाल नहीं हुई, ऐसा मैंने देखा है। अब राहुल गांधी के लिए कोई विशेष प्रावधान हो जाए तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ है। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, इस देश को वास्तव में जिस तरीके से मैं देख रहा हूं आज आगजनी हो रही है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये बहुत गलत मैसेज है तरुण जी। अगर कोर्ट का फैसला आ चुका है उसको आप पॉलिटिकली कर रहे हो कि हमको ये कर दिया वो कर दिया, फिर वही मोदी 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 कर रहे हो। पहले मोदी 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 किया तो सजा हुई, अब कह रहे हैं मोदी ने हमको सजा दिलवा दी है। मतलब इस देश में जुडिशरी भी मोदी चला रहे हैं, चुनाव आयोग भी मोदी चला रहे हैं और सब कुछ मोदी चला रहे हैं। मुझे लगता है आज उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। जिस तरीके से लोग कोर्ट के आदेश के खिलाफ सड़कों पे उतर रहे हैं, ये बहुत सीरियस इश्यू है। मुझे तो लगता है इसके खिलाफ अब इन लोगों के खिलाफ कंटेम्प्ट में भी जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोर्ट पे भी लोग अगर भरोसा तोड़ देंगे तो भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था से भरोसा टूट जाएगा। कोर्ट का लोग सम्मान करते हैं, कोर्ट को लोग मानते हैं, कोर्ट को लोग निष्पक्ष मानते हैं, कोर्ट को मानते हैं भाई ठीक है जो फैसला आया आया। कल को और भी सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले आएंगे, फिर लोग सड़कों पर उतरना शुरू कर देंगे, तब क्या होगा? अगर एक व्यक्ति के खिलाफ एक व्यक्ति को सजा हुई है, पूरी कांग्रेस को सजा नहीं हुई है, पूरी कांग्रेस को जेल में नहीं डाला जा रहा है, कांग्रेस के सारे सांसदों की सदस्यता खत्म नहीं हुई, एक व्यक्ति की हुई जिसने गलत किया उसको सजा मिल गई। अब उसके का चक्कर में पूरे जयपुर में, दिल्ली में, लखनऊ में, पूरे भोपाल में मुझे लगता है मजाक उड़ाया जा रहा है। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कोर्ट से, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, आप इस पे कॉग्निजेंस लीजिए और कॉग्निजेंस लेके इस पे आप नेसेसरी एक्शन लीजिए। अगर कोर्ट के फैसलों के बाद इस तरीके से आगजनी शुरू हो गई, एक व्यक्ति के पक्ष में ऐसी आगजनी शुरू हो गई, तो आने वाले टाइम में बड़े सेंसिटिव केसेस आने वाले हैं।
पॉलीगैमी का मैटर है, हलाला का मैटर है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मैटर है, बहुत सारे मैटर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट देना है। सेम सेक्स मैरिज का जजमेंट केस शुरू होने वाला है। पता चला सेम सेक्स मैरिज का अगर जजमेंट आ गया और उस जजमेंट के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर गए तब क्या हो गया? पॉलीगैमी हलाला पे अगर कोई जजमेंट आया, लोग फिर सड़कों पर उतर गए तो क्या हो गया? अगर इस मामले में जो आज कांग्रेस ने किया है, स्ट्रिक्टली अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्टर्न स्टेप्स नहीं लिया, एक मैसेज नहीं दिया कि नहीं ये नहीं चलेगा, ये कोई पॉलिटिकल फील्ड नहीं है, ये कोर्ट का फैसला है, और कोर्ट का फैसला वो हाई कोर्ट का फैसला हो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला, फैसले का सम्मान होना चाहिए। अगर उस फैसले के खिलाफ आगजनी होगी तो स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। मुझे लगता है ये कोर्ट में मैसेज देने की जरूरत है। हो सकता है कुछ लोग आज हमारे आपकी इस डिबेट को सुन के हो सकता है कंटेम्प्ट भी फाइल करें, हो सकता है कोई PIL भी फाइल हो ऐसी गाइडलाइन बनाने की। अदरवाइज अगर कोर्ट के फैसले के बाद आगजनी शुरू होगी तो अराजकता आएगी इस देश में, फिर तो मतलब इस देश को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तरुण जी, ठीक है, point taken. I'll take this point to Advocate Sridhar Kottaraju. Two things. In your view, the conviction is on tarnishing the image of a community. Is that what the conviction based on? Tarun, I'll have to excuse myself from answering this question because I did not have the benefit of reading the judgment, nor Yes. any of the prosecution material which was placed before the court, including the complaint. Yeah. But I would only confine my observations on the provisions under which he's been convicted. Yes. The conviction is for defamation. Okay. So now, if you look at from a constitutional scheme, Yes. most cherished constitutional right is the right to life under Article 21. That right encompasses human dignity. In fact, the Supreme Court has cited Bhagavad Gita that in Kiran Bedi's case, that a person's reputation is higher than his own life. So therefore, that is the status in our civilization a person has for his reputation. People, when are actually defamed, would feel as if they're as good as killed. I mean, so therefore, that's the value that a person has for his own personal reputation or the reputation of the people he loves or he follows. Now, having regard to that, now the contrary provision is Article 19(1)(a), where a person has a free speech in the political arena. So free speech is a very cherished right, and then the restrictions will have to be meeting the constitutional muster under 19(2). Now, but assuming there is a conflict between an individual's right to reputation and there is a individual's right to free speech, which includes to defame or actually insinuate against an individual, then the courts have always harmonized these conflicting positions in the constitutional rights of two individuals. And then Article 19 is always a right which is subject to reasonable restrictions. And it has to give way to a person's Article 21 right once the right begins. So that recognition has been made by the Supreme Court when a challenge was in fact made by the person in question, I believe, where the provisions of defamation were challenged for being unconstitutional and violative of Article 19(1). So in that case also, the Supreme Court has upheld the provisions of 499 and 500 to come to a conclusion that it is a very important recognition by the lawmakers, the lawgivers, to the status a person's reputation is in our social structure and in our constitutional scheme. So a person can have a right to free speech, but it cannot be at the cost of somebody's reputation, and the law provides a remedy. Because once there is a right to reputation, there will have to be a remedy in case there is a violation of that right of an individual. So I want to ask, sorry to interrupt you, but see, today the Lok Sabha Secretariat issued a notification disqualifying him. In case he gets the sentence stayed, there is one more notification that is issued reinstating him. Is that what happens? See, what happens now is a matter of procedure. As I said, it's a constitutional interdict which has come in and which has disqualified him. And the Supreme Court in Lily Thomas' case has recognized this provision under 389 of CRPC, which confers the power on the appellate court to actually suspend or stay the conviction. See, a mere stay of sentence, Ashwiniji was also referring to sentence. I believe he meant conviction. So stay of conviction is what he was referring to the other cases also, which were carried to Supreme Court. So stay of conviction for an offense and sentence are two distinct species in law. Conviction is to find a person guilty for the offense he is charged, and sentence is the punishment is required to undergo pursuant to that. So you are saying if conviction is stayed, then he gets reinstated as a member of yes, his position in the elected thing will be restored,
subject to the outcome of his appeals. So till then, but he has to go through the court procedure for whatever time it takes. Yes, it is for the court now to decide whether he can continue, whether it is as important an issue and the consequences are significant enough that the conviction itself has to be stayed. See, sentence, suspension or stay of sentence or a grant of bail in pending appeal is a question of an individual's liberty while he's availing a statutory appellate remedy where there is a chance of getting acquitted. So therefore, the person's liberty is generally liberally construed, whereas the sentence is on that pedestal, whereas conviction is on a different pedestal completely. The court will have to have a positively strong reasons to stay the conviction. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अश्विनी जी, श्रीधर जी ने जैसे शेयर किया कि सेंटेंस को स्टे करवाना कोर्ट के थ्रू, कोर्ट का वो अनुमति देना और कन्विक्शन को स्टे करना दो अलग चीजें हैं लॉ में। एक फाइनल कमेंट आपकी तरफ से, ऑलमोस्ट टाइम खत्म होने है। मेरा अपना यही अनुभव है कि अभी तक जितने भी मामले आए हैं 200 से ज्यादा सांसदों विधायकों के, हमने कोर्ट ने अपील एक्सेप्ट किया है, उस पर सुनवाई शुरू कर दिया है, लेकिन बिल्कुल श्रीधर ठीक कह रहे हैं, जो कन्विक्शन है उसको स्टे नहीं किया, इसलिए किसी की सदस्यता जो खत्म हुई थी वो बहाल नहीं हुई। अब जब तक वो दोबारा फिर से पूरा प्रोसेस चलेगा, अगर वो सेशन कोर्ट में गया, सीधे हाई कोर्ट जाएंगे तो उनको डिसाइड करना क्या करेंगे वो सीधे, क्योंकि अभी एक स्टेज उनको पास, सूरत के कोर्ट में एक स्टेज है उनके पास, वो सीधे सेशन जज के पास जाएं, क्योंकि ये जूनियर जज का। बट आपको लगता है ये लंबा खींचता है, बिकॉज कोर्ट प्रोसेस को टाइम लगता है, इंडिया में महीनों लग जाते हैं। हाँ, लेकिन चूंकि एमएलए एमपी के मैटर को 1 साल के अंदर डिसाइड करना है, तो 1 साल के अंदर डिसाइड तो हो जाएगा, लेकिन 1 साल से पहले डिसाइड हो जाएगा ऐसा मेरे को संभावना कम लगती है। कन्विक्शन को स्टे करने के लिए बहुत पूरे उसमें मटेरियल ऑन रिकॉर्ड सब कुछ एग्जामिन करना पड़ेगा, पूरी स्क्रूटनी करनी पड़ेगी, पूरी दोनों पक्षों को सुनना पड़ेगा, और एक बार चलो अगर कर भी दिया तो बाय द वे स्टेट दोबारा हाई कोर्ट में चला गया, तब क्या हुआ? बाय द वे मान लीजिए उन्होंने सेशन में किया, सेशन ने बोला ठीक है हम स्टे करते हैं, लेकिन स्टेट अगर फिर से हाई कोर्ट गया, भाई जैसे राहुल गांधी के पास ऊपरी अदालत में जाने का एक अपॉर्चुनिटी है, ऐसे पुलिस के पास भी, स्टेट के पास भी ऊपरी अदालत में जाने की अपॉर्चुनिटी है, और पुलिस तो छोड़िए, जो मिस्टर मोदी जिन्होंने ये कंप्लेन फाइल किया उनके पास भी अपॉर्चुनिटी है ऊपरी अदालत में जाके उसको कहने के लिए कि भाई देखो ये फैसला गलत हो गया। Thank you so very much. I appreciate both of you joined us today, shared all these things with the viewers. But I will request you to join again as and when the court petition gets filed in a higher court for this. Ashwini Upadhyay ji, Sridhar Puttaraju ji, thank you so very much. Appreciate your joining us, and thank you for sharing all the information with the viewers, which will indeed be useful for them. Thank you so very much. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.